Hello guys, Abhishek here, health coach at My Health Buddy. We are back with another workout for beginners. बस 15 मिनट का है using your body weight. No equipments required and you can do it at your home also. Let's start with some warm up. So we'll start from head to toe. We'll go ahead and start with our neck first. Hands on my waist, left to right, slow and steady. You go up and down. Make sure आपका breathing pattern normal हो. Semi from one shoulder to another. Circle, a complete circle, then back and relax. Second exercise is alternate hand raises. Breathe in. Breathe out. Make sure your movement में आप कोई jerk ना रखें. Go super easy. No extra pressure. अगर आपसे पूरा extend नहीं हो रहा, so you can just extend as much as you can and rest. We go to our hips now. Hip circles. Imagine आप अपनी hip से एक circle बना रहे हैं. Keep your hands on your waist. Let's go reverse. Easy. Breathe in, breathe out. And relax. Next is side bends. Make sure आपके legs थोड़े से wide apart हो. Hands over here on the waist. You go over the head. And come back. Breathe out when you go there. Breathe in here. Try to take your hand over your head. Aapka bicep almost parallel to your ear. And relax. So the last one, we're going for toe reaches. So you lift your legs up and go down. Dusra. If you can't reach for your toe, shin पे tap करें, or else your knee. And relax. The first exercise, it's inchworms. So let's go. Make sure आप reach करें, almost closer to your toes. Go back. Back to the starting position. Inhale, exhale, normally चलता रहेगा. Step by step जाइए. You're almost here. Then you go back. This works great for your core, your shoulders, strength. But आपको make sure करना है कि आप इसमें step by step जाएं. Easy in, easy out, relax. So one set done, 2 more to go. आज हम upper body train कर रहे हैं, तो you need to make sure कि हम easy रहें, breathing pattern normal रखें. फोकस हमें बस ये रखना है कि हमारी जितनी भी जो भी मूवमेंट्स हैं, बिकॉज वी आर डूइंग वन एक्सरसाइज फॉर 30 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड का रेस्ट है, तो आप मेक श्योर करें उन 30 सेकेंड के लिए आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दें, सो दैट इट्स मोर ईजियर फॉर यू टू परफॉर्म थ्रू आउट द वर्कआउट. ठीक है, तो अब रेडी हो जाते हैं. इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट सेट. वी कम बैक टू द सेम पोजिशन एंड लेट्स गो. स्टेप बाय स्टेप एंड वी कम बैक. कम ऑन, वी इन दिस टुगेदर. Almost parallel to the flow position पे आ जाते हैं. You can do this. Make sure you're going ahead. Good. Come on. Breathe in, breathe out. Core tight रखेंगे. And relax. So 2 sets हो गए, 1 set और बचा guys. One important thing, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो गलतियाँ करते हैं, उनमें से एक ये है कि when they go down, उनका hip आगे चला जाता है. हमें ऐसा नहीं करना है. We need to make sure हमारा कोर टाइट रहे, हमारा लोअर बॉडी स्ट्रेंथन अप रहे, सो दैट कोई अननेसेसरी मूवमेंट ना हो. ठीक है, इफ यू रेडी फॉर इट, लेट्स गो. लास्ट सेट है इस एक्सरसाइज का. लेट्स गेट इनटू द जोन गाइस. कम ऑन, लेट्स गो. एज मेनी एज यू कैन. सिर्फ 30 सेकेंड्स है. कम ऑन, ट्राई टू गिव योर बेस्ट. इसके बाद 4 more exercises left guys. Breathe in, breathe out.
Come on, keep your core tight. You can do this. One more. And relax. So एक एक्सरसाइज डन गाइस, 4 more to go. अब हमारा इंटेंशन ये है कि हमें ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल करना है. एक ही एक्सरसाइज हुई है तो बी रेडी फॉर 4 more. इफ़ यू आर थर्स्टी, एक छोटा सा सिप पानी का पी लीजिए, वाइप योर फेस ऑफ एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन. अगली हम कर रहे हैं, उसे कहते हैं शोल्डर टैप्स. ओके, सो विल बी इन द सेम पोजिशन, विल बी गोइंग डाउन, टैपिंग ऑन आवर शोल्डर्स, कीपिंग आवर कोर टाइट. ये हमारा इंटेंशन है. So as many as we can without losing the position. So let's go. We go down, almost inchworm की तरह. Your hair. अब intention ये है कि हम shoulder को tap करते हैं. अगर आपको लग रहा है कि you can't reach out to your shoulder, try to tap somewhere over here. But if you can, that's pretty good. 5. और ये खत्म होता ही, you come back. To our knees, we're back. One set done guys, 2 more to go. तो ये चीज़ आपको वापस याद रखनी है, what we did in the last one, कि आपका hip नीचे ना जाए. Need to make sure आप अपने आप को बेस रखें. The core is tight because this more of a core engaging movement. आपका shoulder भी gradually work हो रहा है. You need to make sure कि आप इस पर आराम से focus करें, ना ही झूलें side to side. You're just in the position. Okay? तो let's go for it. अगला set start करते हैं. We come back to the same position. सेम थिंग, इजी. अननेसेसरी मूवमेंट ऐसे वाली नहीं चाहिए हमें. मेक श्योर करना है कि आप रीच करें अपने शोल्डर के लिए. एक छोटा सा टैप, कोर टाइट है थ्रू आउट, ब्रीथ चलता रहेगा. 5 4 3 2 एंड रिलैक्स गाइस. सो 2 sets डन गाइस. एक और बचा है. One thing you have to remember is, अगर आपको grip बनाना है तो make sure you keep your fingers all open up. ऐसे हाथ ना रखें. This will eventually help you to grip on the floor. Okay? और have a sip of water. प्यास लग रही है तो wipe off your face and then we're ready for it. Also you have to remember कि जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आप अपने core को engage करें. ठीक है? If you're ready for it, let's go. Last set. We're in this together. Tap, easy, breathe. अगर आपको during the set लग रहा है कि not able to stay on top, take your knees down, do a quick rest and come back. Core tight है, fingers opened up हैं, closed नहीं है. This helps me balance up. We're going easy, okay? With 3 more exercises के बाद stay in zone guys. And रिलैक्स. सो गाइज, 2 एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं, 3 more to go. आपको अभी तक समझ तो आ गया होगा. इट्स मोर ऑफ अपर बॉडी सेशन टुडे. वी फोकसिंग ऑन योर अपर बॉडी, योर कोर. यू नीड टू मेक श्योर कि हम उस पर ज़्यादा फोकस करें. आज लेग्स का कोई सिनारियो या फिर कोई मूवमेंट नहीं है. तो अगली एक्सरसाइज जो है उसे हम कहते हैं क्रॉस क्लाइंबर्स. सेम पोजिशन एज लास्ट वन, बट आई विल बी मेकिंग श्योर मेरा नी ड्राइव हो मेरे हैंड्स की तरफ. दैट टू ऑल्टरनेटिवली. ओके, तो इफ यू आर रेडी फॉर इट, लेट्स डू दिस. 3 more. In the position and we're ready to go. My knee goes to my wrist, alternate hand, alternate leg. आप इसको एक थोड़ी पेस स्पीड पे भी कर सकते हैं. It's totally on you, how you want to go ahead with it. मेरा core throughout engage है. Use your speed guys, use your own speed and we're good to go and relax. Same mistake to be taken care of जो last time हमने याद किया था कि आपके hips एक straight line में रहेंगे. You're not supposed to push them ahead. आपके fingers, they're always making sure they're all on grip and we go in the motion. ठीक है? तो पानी पी लीजिए. If you're ready for it, I understand heart rate थोड़ा high है, breathing pattern ऊपर हो रहा होगा, but we're in this. Halfway through almost guys. Let's do this. Let's go. Next set, okay? Every time I bring my knee ahead, I breathe out करता हूँ. Making sure the core is tight. आप अपनी पेस पे कर सकते हैं, but remember we have only 30 seconds. Keeping your core tight.
आई एम श्योर आप अपने कोर को फील कर पा रहे होंगे इसमें। एंड ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस सेट एंड रिलैक्स। गाइस 2 sets done, 1 more to go। एक चीज़ यू गाइस कैन सी इवन माई हार्ट रेट इज़ हाई, मेरे ब्रीदिंग पैटर्न ऊपर नीचे हो रहा है। तो फॉर द होम बेस्ड वर्कआउट्स थिंग, या फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि वर्कआउट करने के लिए आपको जिम जाना ज़रूरी है। ब्रिंगिंग इन अ 15-minute वर्कआउट फॉर यू, you can do it anywhere. It will eventually help you out to burn those calories up. So let's get ready. Let's go. Last set. Same position. Go tight. Come on, guys. Keep it go tight. I can feel my core. Make sure आप अपने core को tight रखें. Keep going. Almost in the end of this movement. In this together and relax. 3 exercises done, guys. पहले इनिशियली हमने करे inchworms, फिर उसके बाद हमने करे shoulder taps, फिर अभी हमने लास्ट में किए cross climbers। 4th exercises करेंगे low elbow plank to high plank। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग मूवमेंट रहेगा guys, but I want you to make sure you go easy with it। कोई jerking movement ना हो। Breathe in, breathe out, relax। We'll be focusing on the core, okay? So if you're ready for it, let's go। So we start with a high plank position। And 1, 2, 3, 4। जहाँ पे मैं अपने एल्बोज को प्लेस कर रहा हूँ वहीं पे आई एम मेकिंग श्योर आई एम कमिंग बैक। कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं है इसमें। माय कोर इज टाइट थ्रू आउट। one more and relax। एक सेट हुआ गाइस, 2 more to go। इस एक्सरसाइज के ड्यूरिंग मैं आपको 2 वेरिएशंस और दिखाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि एल्बो टू हाई प्लैंक इज समथिंग दैट्स चैलेंजिंग फॉर यू, आपके शोल्डर पे ज़्यादा लोड आ रहा है या फिर आपकी लोअर बैक एक्सट्रीम स्ट्रेस आ रहा है, तो आई विल बी शोइंग यू मूवमेंट्स 2 more। या तो आप नॉर्मल एल्बो प्लैंक कर सकते हैं या हाई प्लैंक कर सकते हैं। इसको मैं आपको थ्रू आउट दिखाऊंगा, ठीक है? सो इफ यू रेडी फॉर इट, लेट्स गो। सो गाइस, फर्स्ट वेरिएशन, या तो आप इस पे रह सकते हैं थ्रू आउट फॉर दोस 30 seconds। अगर आपसे एल्बो प्लैंक भी ना हो तो यू कैन स्टे ऑन द हाई प्लैंक। स्टे हेयर कोर टाइट, ओके? अब वापस शुरू कर देते हैं। मेक श्योर योर कोर इज टाइट। एवरी टाइम यू प्रेसिंग अवे, इमेजिन योरसेल्फ पुशिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम द फ्लोर। ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इट एंड रिलैक्स। 2 sets done, guys। एक और बचा है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हर एक्सरसाइज का एक मॉडरेट और ईजी वर्जन होता है। तो ये नहीं सोचना कि मेरे से ये एक्सरसाइज नहीं हो रही तो आई जस्ट लेट इट बी, नहीं करूँगा या करूँगी। बिकॉज हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं यार ये एक्सरसाइज मेरे से नहीं हुई, मैंने छोड़ दी। उसका एक दूसरा अप्रोच ज़रूरी है। एटलीस्ट मूविंग इज़ इंपॉर्टेंट, ओके? तो यू नीड टू मेक श्योर कि बिगनर वर्जन करो, ईजी वर्जन करो, पर करो। दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो लास्ट सेट, 3rd सेट, लेट्स गो फॉर इट। कम ऑन, लेट्स गो गाइस। ये 4th एक्सरसाइज है। We're almost at the end of it। Go tight। We're in this together। Come on। Breathe in, breathe out। This is fun though, at times। Let's go and relax। 4 exercises done, guys। 1 more to go। So we'll be going for toe reaches। Same movement है। We'll be making sure we reach for our toes, push up position में आके। I'll be showing it to you ahead। एक एक्सरसाइज बची है गाइस। We've done 4। You have done great, by the way। So last one, stay with me, couple of more minutes and then we'll be done। Let's go। Push up position, I reach for my toe and I come back। वही चीज़ आपको वापस याद रखनी है। You come back to a normal push up position। You don't let your hips go way too low। रीच करो अच्छे से। Let's go and relax। एक सेट डन गाइस, 2 more to go। लास्ट कपल ऑफ मिनट्स। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, सेम थिंग, नो मिस्टेक्स टू बी डन। हिप ड्राइव नहीं करना है आगे। विल बी स्टेइंग ऑन द सेम पोजिशन। ऑल्सो इफ यू कांट रीच फॉर योर टो, आप अपने नी पे टैप दे सकते हैं। सेम थिंग, ठीक है? योर हिप्स गो अप, यू गो फॉर द टैप एंड यू कम बैक। मेक श्योर आप ईजी रहें बिकॉज इट पुट्स अ लॉट ऑफ लोड ऑन योर शोल्डर्स, बट यू हैव डन ग्रेट बाय फार। एक और बची है, तो लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। लेट्स गो गाइस। We're in this। We reach
reach and breathe out. Remember, you can give knee taps too. Knee taps. अगर आपसे रीच नहीं करा जा रहा, knee tap. फिर थोड़ा सा हो रहा है तो shin tap. But if you can reach for your toes, make sure you reach for your toes and go easy and relax. 2 set done, guys. 1 more to go. Make sure अगर आपको प्यास लग रही है तो just go and have a sip of it. बस थोड़ा सा. Last 30 seconds. We're in this. We've almost completed the whole beginner circuit. I'm sure आपको मज़ा आया हो. नहीं आया होगा तो फिर भी कोई बात नहीं. But it was fun for me. So let's go for it. Let's get ready. We're in the position. Let's start. Last 30 seconds, guys. We're in this together. Make sure your core is tight. Reach. If you can't reach, you have your knee taps. Easy. Almost there. Almost. In 3, 2, 1 more. And relax. And we're done, guys. 15 minutes, 5 exercises. You guys did great, by the way. So we'll be coming ahead with more variations, more circuits, things you have to enjoy so that your fitness journey, it's super fun. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, if you had fun, like the video and do subscribe to our channel.